Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter preparation of subsidiary books for intermediate first year students for Telangana State Board of Intermediate Education. Chapter 4, page number 111, question number 6. Enter the following transactions in proper subsidiary books. So in our previous problems, the question used to specify whether you need to prepare purchases book एंड यू नीड टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न्स बुक. इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स करे उसमें ये स्पेसिफाई करा हुआ रहता था कि आपको परचेजेस बुक बनाना है या परचेज रिटर्न्स बुक बनाना है. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स मतलब यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेजेस, सो इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, और इट इज़ अ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज रिटर्न्स सो दैट इट कैन बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न्स बुक. तो आपको पहचानना है, अगर वो परचेजेस है तो परचेजेस बुक में लिखेंगे, परचेज रिटर्न्स है तो परचेज रिटर्न्स बुक में लिखेंगे. सो हियर इज द फॉर्मेट फॉर परचेजेस बुक. व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर परचेजेस बुक? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट, रुपीज. एंड व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर परचेज रिटर्न्स बुक? डेट, पर्टिकुलर्स विल बी द सेम. इंस्टेड ऑफ इनवर्ड इनवॉइस नंबर यू विल बी राइटिंग इट एज डेबिट नोट. यहाँ पे जो इनवर्ड इनवॉइस नंबर है ये बजाय इनवर्ड इनवॉइस के यहाँ पे डेबिट नोट आएगा. एलएफ विल बी द सेम, वहाँ भी एलएफ था, परचेजेस बुक में भी एलएफ है, लेडजर फोलियो है. परचेज रिटर्न्स बुक में भी एलएफ लेडजर फोलियो रहेगा. द ओनली डिफरेंस इज दैट परचेजेस बुक हैज ए कॉलम ऑफ डिटेल्स, परचेज रिटर्न्स बुक विल नॉट हैव ए कॉलम ऑफ डिटेल्स, एंड अमाउंट विल बी द सेम फॉर परचेजेस बुक and purchase returns book. So the format for purchases book is date, particulars, inward invoice number, LF, details, amount, and the format for purchase returns book is date, particulars, debit note, LF, amount. Let us solve the problem. The transactions are given for the year 2018 for the month of June. The first transaction is given on June 1st. Purchase goods from Arun 2500. Purchases का मतलब आप सामान खरीद रहे, अरुण से खरीद रहे, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक. सो हाउ डू वी राइट इट? 2018 जून 1st. किससे खरीद रहे आप सामान? अरुण से खरीद रहे. तो यहाँ पर्टिकुलर्स में आप किसका नाम लिखेंगे? अरुण का नाम लिखेंगे. कितने का सामान खरीद रहे आप? 2500. So 2500 will be recorded in amount column. Next, after June 1st, we have a transaction on June 3rd. Purchased goods from Prakash 7000. Again, you are purchasing the goods, so it is a transaction related to purchases book, and you are purchasing from Prakash. The name of a person is also given in the question. It means that it is a credit transaction, and credit transactions are recorded in purchases book. तो June 1 के बाद आप किससे खरीद रहे? कौन से दिन खरीद रहे? June 3rd के दिन खरीद रहे. किससे खरीद रहे आप सामान? प्रकाश से खरीद रहे. सो प्रकाश नेम विल बी रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर्स कॉलम. कितने का सामान खरीद रहे आप? यू आर परचेजिंग गुड्स फॉर रुपीज 7000. सो 7000 विल बी रिकॉर्डेड इन अमाउंट कॉलम. नेक्स्ट वी हैव अनदर ट्रांजैक्शन ऑन June 6. रिटर्न आउटवर्ड टू अरुण. सो रिमेंबर दैट रिटर्न आउटवर्ड इज द अदर नेम फॉर परचेज रिटर्न्स. तो यहाँ पे हम June 1st के दिन अरुण से सामान खरीदे थे, वो परचेजेस बुक में लिखे. June 6 के दिन कुछ सामान डिफेक्टिव रहने की वजह से अरुण को वापस कर रहे, so it is purchases return, so it will be recorded in purchases returns book, and the amount is 800. So we will be writing it as in purchases returns book, we will be writing it as 2018. The date will be taken here as 2018 June 6. We are returning the goods to Arun, so Arun name will be recorded in particulars. कितने का सामान वापस कर रहे हैं आप? वी आर रिटर्निंग गुड्स फॉर रुपीज 800. सो 800 विल बी रिकॉर्डेड इन अमाउंट कॉलम. तो यहाँ पे आप अमाउंट में लिखेंगे 800. नेक्स्ट, आफ्टर June 6 वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन June 14. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नागराज 10,000. ट्रेड डिस्काउंट 10%. सो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नागराज ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और क्योंकि यहाँ पे आप सामान खरीद रहे, इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक. सो एंड वी आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%. So first the date will be taken as June 14. किससे खरीद रहे आप सामान? नागराज से खरीद रहे. So in particular you will be writing the name of Nagaraj. He is allowing you discount. So trade discount जो रहेगा वो subtract करेंगे, less trade discount. कितने का सामान खरीद रहे आप? You are purchasing goods for 10,000. एंड ही इज अलाउिंग यू ए डिस्काउंट ऑफ 10%. तो पहले आप डिटेल्स में जो है ना कितने का सामान खरीद रहे नागराज से? यू आर परचेजिंग गुड्स फॉर रुपीज 10,000. ये बंदा जो आपको 10% डिस्काउंट दे रहा, तो 10% डिस्काउंट 10,000 का क्या आता? 1000 रुपीज़. उसका कैलकुलेशन देखिए, 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई
100। इसका आसान तरीका क्या है, 10% का जितने भी जीरोस रहते एक जीरो कम कर देना, तो 10% ऑफ 10,000 विल बी 1000 रुपीज़। तो 10,000 का सामान खरीद रहे आप, जिसमें से 1,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा, तो बिल अमाउंट क्या रहेगा, 9,000 रहेगा। नेक्स्ट, आफ्टर जून 14 वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन जून 19, goods purchased from Nikhil for cash 4,000 rupees. So in this problem we have purchased the goods from, in this transaction we have purchased the goods from Nikhil, but at the same time we are also paying cash to Nikhil. So ये cash transaction है, it is not recorded in purchases book. So after completion of the problem we will be writing a note for it that the transaction dated June 19 is a cash transaction, hence it is not recorded in purchases book. तो अब इसके लिए यहाँ पे एक नोट लिखेंगे आप, and the note will be transaction dated on June, कौन सा ट्रांजैक्शन था वो, जून 19। तो ट्रांजैक्शन डेटेड ऑन जून 19 is a cash transaction and hence it is not recorded in purchases book, क्योंकि आप पैसा देके खरीद रहे तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट, आफ्टर जून 19 वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन जून 25, गुड्स रिटर्न टू नागराज 1200। तो यहाँ पे हम नागराज से जून 14 के दिन सामान खरीदे थे, इसमें से कुछ सामान डिफेक्टिव है तो हम वापस कर रहे, तो खरीदे वक्त हम उसको परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करें, तब वापस करेंगे जब आप उसको परचेज रिटर्न्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो द डेट विल बी टेकन एज जून 25, इन पर्टिकुलर यू विल बी राइटिंग इट एज नागराज एंड अमाउंट यू विल बी राइटिंग इट एज 1200। तो आप इसका ये ट्रांजैक्शन कैसा लिखेंगे, जून 25 you are returning the goods to Nagaraj, so his name will be recorded in particulars column। कितने का सामान वापस कर रहे हैं आप नागराज को, 1200, so 1200 will be recorded in amount column। Next, after June 25 we have a transaction on June 28, bought goods from Vishal 1500। bought का मतलब खरीदना, so it is a transaction related to purchases, so it will be recorded in purchases book। you are purchasing the goods from Vishal, ये transaction में किसी इंसान का नाम दिया हुआ है, it means that it is a credit transaction and credit transactions are recorded in purchases book। तो आप किससे खरीद रहे, विशाल से खरीद रहे, कौन से डेट पे खरीद रहे, जून 28, so here the date will be taken as जून 28। किससे खरीद रहे आप सामान, विशाल से, so विशाल नेम will be recorded in particulars। कितने का सामान खरीद रहे आप, 1500, so 1500 will be recorded in amount column। Now as we have completed all the transactions, we'll just do the total here। यहाँ पे टोटल देखिए आप, 9000 plus 1000 10,000, 10,000 plus 7,000 17,000, 17,000 plus 2,000 19,000, 19,000 plus 1,000 18,000, so 9 plus 1 10, 10 plus 7 17, 18 19, 19 plus 1 20,000, so the total is 20,000। यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल, सो द टोटल ऑफ परचेजेस बुक इज 20,000। तो इसका क्या मतलब है, आप टोटल जो सप्लायर से सामान खरीदे वो लोगों को 20,000 बाकी है। अगर इंडिविजुअल सप्लायर्स की बात करें तो वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण फॉर 2,500, फ्रॉम प्रकाश फॉर 7,000, फ्रॉम नागराज फॉर 10,000, फॉर विच ही हैज गिवन अस अ डिस्काउंट ऑफ 1,000, सो वी हैव टू पे हिम 9,000, एंड फ्रॉम विशाल वी हैव परचेज गुड्स वर्थ 1,500। तो हमें ये टोटल ये सबको मिला के 20,000 पे करना है। फिर आप परचेज रिटर्न्स का टोटल करेंगे, तो इसका क्या मतलब आता, आप अरुण से जो सामान खरीदे थे उसमें से 800 रुपये का सामान वापस करें, नागराज से जो सामान खरीदे थे उसमें से 1200 का सामान वापस करें, मतलब अरुण से 800 रुपये आना है, नागराज से 1200 रुपये आना है। तो अब यहाँ पे परचेज रिटर्न्स का टोटल देखिए, 2,000 रुपीज़, 1200 प्लस 800, इट इज़ 2,000। और एक ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड नहीं करें उसके लिए यहाँ पे नोट लिखे देखिए, ट्रांजैक्शन डेटेड
on June 19 is a cash transaction and hence it is not recorded in purchases book. Hope you have liked my video and hope you have understood the topic. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.